हमारे यहाँ करप्शन नहीं है। करप्शन उसको तो बोलता है, उसको बोला जाता है जहाँ में हम ऑफिस में जाएगा एक कागज को लेने के लिए हम 100 रुपया दे करके टेबल के नीचे से हम खरीदता है, वो करप्शन है। यहाँ तो डाका चल रहा है, डकैती को करप्शन नहीं बोलता। हर गवर्नमेंट का हर सरकारी संस्था एक दुकान की तरह चल रहा है। प्लानिंग डिपार्टमेंट स्कीम बेच रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट बेच रहा है, सरकारी डिपार्टमेंट लोग नौकरी और कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है, एपी और एसएसबी क्वेश्चन पेपर बेच रहा है, और कुछ लोग नल एंड वॉइड का डिबेट में लगा हुआ है। Hello, you're watching the network connecting state in one news. I'm Atar Bengia. So let's shift our focus once again to APPSC fiasco. The revolution ignited by one of the aspirant, Mr. Gyamar Padang, the whistleblower, unfolding the bitter truth about the paper leakage that had happened in A examination 2022. Mr. Padang has truly transcended down to almost every examination of the APPSC. Initially, it was the fight of merely the aggrieved aspirant of APPSC candidates, but today it has become people's movement. Today, this battle is not merely centered to aggrieved aspirant of APPSC. It has become the battle of every person, every home, every parents, and in fact, mass of Arunachal. This is the battle of people of Arunachal Pradesh. The revolution have just started, and it shall never go silent, and it shall never die. It's a revolution. It's a fight for the right, fight for the justice, and to break the bridge of money culture that's been happening in the examination, paper leakage. Selling of question paper of top-notch and respected posts like APPSC paper as such is a matter of huge discussion indeed. That proves that our system is polarized, paralyzed, and self-interested. Well, today a mass meeting underway here at IG Park by Pan Arunachal Joint Steering Committee, APPSC. Massive of aggrieved candidates showed up. Not just the candidates, the students, the parents, and the entire public of Arunachal Pradesh made their participation in today's massive meeting. Active participation of entire people of Arunachal Pradesh in today's mass meeting is to prove that this issue hasn't died and it shall never die. The fight shall be carried forward. So here's the report of today's mass meeting. So right now we are here at IG Park. As you can see, there's mass meeting being underway here today. So joining with me is one of the aggrieved aspirant of APPSC. So first of all, welcome to the network. So what are your expectations from the state government? Do you think that justice shall be served? Good afternoon, everyone. As we have gathered here to discuss our way forward with the people of Arunachal Pradesh, तो जैसे कि आपने क्वेश्चन किया है कि what we are expecting from the government. तो as we have already put forward our demands, starting charter of demands, तो उसको देख के government cognizance लेते हुए हम लोग को फर्स्ट मीटिंग बुलाया विद अपसू, अंशु और APPSC कमीशन से भी कुछ मेंबर्स वर देयर, SIC से भी था. सो वी हैड आवर डिस्कशन विद गवर्नमेंट ऑल्सो 10 तारीख को, जनवरी 10 तारीख को 10 तारीख को हुआ था 2023 को. तो उसमें जो है हम लोग का जितना भी मूवमेंट है टिल नाउ, इट्स बीन 6 मंथ. आवर डिमांड इज वेरी लॉजिकल. देयर इज नॉट ए सिंगल पॉइंट जिसको हम लोग को गवर्नमेंट जो एड्रेस नहीं कर सकता है. तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने भी कॉग्निजेंस लिया और उसने बोला है कि चलो हम लोग जो है आप लोग का जो डिमांड है और वो लोग क्या सोचता है उसको बात करेगा करके 10 तारीख को बुलाया था हम लोग को, जनवरी 10 तारीख को. तो वी हैड फ्रूटफुल डिस्कशन, लेकिन उसमें कंक्लूसिव नहीं था वो. दे हैड सेड कि हम लोग को जो है फर्दर मीटिंग्स जरूरी है इसके लिए, सिंस वी हैड प्लेस 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स. तो कुछ को उसने एड्रेस किया और कुछ को जो है उसने बोला है कि इट नीड्स फर्दर डिस्कशन. तो हम लोग ने भी कहा चलो ठीक है, 6 महीना तो रुक लिया, तो और 2-3 दिन रुकने में कुछ नहीं है करके. तो वो 10 तारीख को ऐसा करके एक चार्टर ऑफ डिमांड्स में जो है हम लोग जो है एस्पिरेंट गवर्नमेंट के साथ ने जो है डिस्कस किया था. तो वो डिस्कशन में जो है हम लोग ने अपना पूरा बात जो है प्लेस किया, गवर्नमेंट ने अपना बात प्लेस किया. तो एक कंक्लूसिव डिसीजन नहीं आने का वजह से उसने बोला है कि वी विल हैव नेक्स्ट मीटिंग ऐसा करके. तो अभी हम लोग को 2 फरवरी को जो है दूसरा बुलाया है मीटिंग. तो हम लोग एक्सपेक्ट करता है कि दिस टाइम दिस इज
that meeting will be once and for all type का कि multiple meetings के लिए अभी हम लोग के पास में भी टाइम नहीं है. हम लोग को भी पढ़ना है, लिखना है, we can't be हमेशा हम लोग जो है रोड में आके प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है. Every now and then we cannot conduct this kind of mass meeting and all. तो इसीलिए हम लोग को लगता है कि जो ये 2 तारीख का जो मीटिंग होने जा रहा है गवर्नमेंट के साथ से, they will come up with logical solution, क्योंकि our demand is logical. हम लोग का जो डिमांड है वो लॉजिक है, उसमें लॉजिक है, तो गवर्नमेंट का भी कुछ जो लॉजिकल कंक्लूजन आना चाहिए. और अभी और एक बात बोलना चाहूंगी कि 10 तारीख से लेके अभी जो 2 फरवरी तक अभी हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 मंथ. तो जैसे हमने लास्ट ब्रीफिंग में भी बोला था कि 1 मंथ इज मोर देन एनफ टू हैव अ लॉजिकल कंक्लूजन इन एनी पॉइंट, जितना भी हम लोग का 13 पॉइंट है. तो आई थिंक गवर्नमेंट से हम लोग यही एक्सपेक्टेशन रखता है हम लोग, वी एज एस्पिरेंट एग्रीव्ड एस्पिरेंट, की गवर्नमेंट सीरियस एनफ है, इसीलिए हम लोग को मीटिंग पे मीटिंग बुलाया है अभी तक 2 बार. फर्स्ट में चलो कंक्लूजन नहीं आया है, लेकिन सेकेंड में वी एक्सपेक्ट एटलीस्ट कुछ तो कॉग्निजेंस लेते हुए कुछ एक अच्छा कंक्लूजन में ताकि हम लोग को कल को जाके हम लोग भी दुख ना हो कि गवर्नमेंट ने हम लोग का टेकल अप नहीं किया है, हम लोग को गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया, ऐसा करके हम लोग को भी दुख तकलीफ ना हो. इसलिए नेक्स्ट मीटिंग में जो है हम लोग वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि हम लोग को एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा. I personally believe that if the government of Arunachal Pradesh, they are against the corruption, then I personally believe that yes, certainly justice will be served. Since such type of corruptions can be इसको हम लोग अनदेखा नहीं कर सकता है, तो इसीलिए I believe that the core committee or they are also fighting for that, and in future I hope that the government of Arunachal Pradesh will definitely take a legal action against this. Yes, we want the government to listen to us, because this is not a thing to take in a lenient sense. Time has come, like we need to, you governments need to fast track our demands, because our demands is not only our demand, not only experience demand, it's a demand of all the public of Arunachal Pradesh, and and it's a high time that government needs to address this and take it to fast track. I firmly believe that the government of Arunachal Pradesh will give us justice within they won't take that much time, right? As per said, justice delays, justice denied. So I would like to request government of Arunachal Pradesh as well as to the concerned department, please give us justice. जितना जल्दी हो सकेगा justice दीजिए. There was huge debate going on implementation of null and void. So could you give us a brief citation on emphasizing of null and void, why it should be implemented? See, when it comes to null and void, we are not separating deprived candidate and those candidate who have already got the job. तो यहाँ हम लोग जो है ये 2 चीज में लड़ाई नहीं चल रहा है. We are demanding because process has been compromised. तो यहाँ प्रोसेस को हम लोग क्वेश्चन कर रहा है. तो इम्प्लीमेंट अगर जब वो प्रोसेस ही गलत है तो उसमें तो नल एंड वॉइड तो होना ही है. अगर चलो ये हम लोग अगर कहीं में हम लोग को गलत लग रहा है गवर्नमेंट का तरफ से भी या तो पब्लिक को भी किसी को भी लाइक फॉर दैट मैटर अगर किसी को भी कुछ भी पॉइंट हम लोग को गलत लग रहा है स्पेसिफिकली आपने जो पॉइंट नल एंड वॉइड का किया तो उसको लेट देम आल्सो कम अप विद देयर लॉजिकल पॉइंट की ये नहीं होना चाहिए करके वी आर वेरी मच रेडी विद आवर पॉइंट की क्यों होना चाहिए. और आपने जैसे बोला है कि एम्फेसाइज क्यों करना है नल एंड वॉइड में तो वही है कि प्रोसेस गलत हुआ है सिस्टम में कुछ गलती था तो उसको वो लोग कैसे रेक्टिफाई करेगा अभी हाउ दे आर गोना कंपेंसेट दोज पीपल हु आर बीइंग डिप्राइव्ड. तो इसीलिए जो है नल एंड वॉइड इज द ओनली सोल्यूशन. तो इसीलिए यहाँ में हम लोग वी आर नॉट हियर टू हम लोग उसको डिवाइड एंड रूल करने नहीं आए कि हम लोग को जॉब नहीं मिला है तो हम लोग जो है वो लोग का जॉब छीनना चाहता है. दैट इज नॉट आवर मोटो. आवर मोटो इज प्रोसेस हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड तो नल एंड वॉइड करके उसको रिकंडक्ट करना है. Null and voids in this regards, as far my personal opinion is concerned, I personally believe that if the interview or any kinds of competitive examination has been conducted in an unfair way, then first of all, if you think that you are fair one, then you have to come in front of your public domain that yes, I am clean, and any government or any kinds of pressure groups, they have the right to question me. But if you think that if this kinds of examination has been conducted in an unfair way, then definitely I am opted for null and void. The thing is, the null and void actually, we don't we don't have any personal grudges, any personal enmity with anyone. The only thing we are fighting for, the only thing our movement is for,
we need to be clear that the exam process itself, it was a compromise. So there's no question about who is genuine and who is not genuine. The system itself was compromised. So we need null and void. Null and void, what I feel is actually essence of competitive exam was totally, what to say, it was a big failure, right? Exam itself was compromised. So I do support null and void. As we look into our state, Arunachal Pradesh, यहाँ ऐसा होता है कि a issue arise, then it goes silent, then it dies. When it comes to APPSC fiasco, do you think the issue will go silent as there are other issues, or you'll carry it forward? See, I think in the history of Arunachal, this is I think one of the issues जिसमें पूरा public is like with us. और ये issue जो है, as we have been saying कि this is not just confined into one examination. It is, more than 92 examinations का बात है यहाँ पे. और when it comes to more than 92 examinations, every household is like equally, participating. तो हर घर का तो कोई ना एक कोई बच्चा तो यहाँ पे participate किया ही होगा. Like candidate तो होता ही होगा कोई एक अलग कोई भी exam में. तो ये जो इशू अभी हम लोग जैसे कि आपने बोला है कि खत्म हो जाएगा जैसे शुरू हुआ था ना, तो हम लोग जब स्टार्ट किया है हम लोग we had that we made our like mind very clear कि if we are taking up this issue then we won't get silent or we will not die until or unless we get justice. तो ये जैसे अरुणाचल में एक मुद्दा राइज होता है and then वापस उसका डाउनफॉल होता है, that might be the case of other issues. लेकिन ये हम लोग का जो APPSC का इशू है, this is the issue of like future of our state. तो we are not going to be mum anymore. अभी तो हम लोग चुपचाप बैठा ही नहीं है अभी तक, we have just started in fact. तो अभी हम लोग जो है जैसे ये 6 महीने से हम लोग अभी तक लड़ते आ रहे हैं, तो 6 months इज आई थिंक नॉट लाइक वो एक इनफ ये प्रूफ करता है कि हम लोग अभी तक नहीं थका है. 6 months इज इनफ टू प्रूफ आर कंसिस्टेंसी. तो 6 महीना तक नहीं थका है तो आगे भी नहीं थकेगा. एक लॉजिकल कंक्लूजन हम लोग चाहता है, तो until or unless we get that logical conclusion we are not going to stop. If we are aware, then I personally believe that there should be some kinds of resolution. That's because we can't go in wrong way, especially for sustainable futures. So if you are really working for the sustainable futures, then you have to mend yourself in the present situations. That's what I personally believe. It's the main purpose why we are conducting a mass meeting today. Because so long as mass is with us, so long as the public and the whole जनता जब तक अरुणाचल के सब लोग हमारे साथ है, तो we don't think it will die a natural death. I would like to say we will not spare anybody this time, and we will continue till our last breath. And I do believe that under the fund, JSC committee will continue this movement, and we'll get the success. So what's your expectation from Team APPSC? Are you satisfied with their statements which were surfaced in the social media network? Well, as far my own opinion is concerned, I was hoping for lots of expectations was there from the APPSC side, as because it is one of the dignified students' union of our state. And in this regard, I personally believe that APPSC is not up to the mark as per expectation is concerned. Yeah, honestly, we don't agree with the statements given by APPSC, but still other demands other than null and void, they are doing it so as a joint resolution. So as long as they are doing the other parts also, we are with them. According to me, APPSC actually stands for student union, right? It stands as All Arunachal Pradesh Student Union, and I do believe that actually APPSC should work for our concern, right? For our for our benefits. At right now, I don't want to say anything, but it is their wisdom whether they are supporting us or not. It is up to the APPSC. So I have a last closing question for you, as today a mass meeting underway here at IG Park, as there's a positive aspect. We can see participation of not merely the aspirant but also the parents, the students, also the elder people have come to motivate, and also the entire public in nutshell. So but yet again,
on the other side of the story, there are some students who are still attending coaching and for the classes. So would you like to leave any remarks on them? See, we cannot force anyone to stop studying. We only can appeal that if the system is compromised, if वो जो system है under which you are going to write your exams, वो ही अगर compromise है, तो how can you be assured कि अभी हम जो पढ़ रहा है कल को जाके आप वो post के genuinely लड़ सकेगा, या तो genuinely आप लिख सकेगा वो exam को जाके. तो we cannot force anyone to stop their studying or their preparation. लेकिन अपील कर सकता है कि जैसे कि आज mass movement हुआ है, तो at least they could have participate, यहाँ में participate कर सकता था. आके यहाँ में जो है अपना एक solidarity जो एक पार्टिसिपेशन का थ्रू दिखा सकता था कि दे आर आल्सो विद अस करके. लेकिन चलो कोई नहीं है, अपना अपना दे माइट बी हैव देयर ओन एजेंडा अपना लाइफ को लेके. वी कैन नॉट डिक्टेट एनीवन. लेकिन इतना हम लोग वो लोग को यहाँ तक एक क्लियर पिक्चर दिखा दे कि कितना अभी तक हम लोग को बुद्धू बनाते आ रहा था कमीशन. जो इनफैक्ट टॉपर्स लोग से ही घोटाला निकल रहा है. तो अभी हम लोग ये बोलेगा कि जो स्टूडेंट्स आप जैसे बोले जो अभी कोचिंग में जा रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो वो लोग को ये बोलेगा कि चलो वो आपका पार्ट है कि यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ. लेकिन उतना रियलिटी चेक लेके भी बैठो कि आप जिसका अंदर में एग्जाम लिखने जा रहा है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज थे. तो वही बोलेगा कि आगे अगर आज मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया तो इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो हम लोग को भी सोच के जितना ये जनता को सोच के इतना बुरा बुरी लोग आया है ना हम लोग को साथ देने के लिए, वो लोग तो कुछ देख के ही जेन्युइनिटी को देख के ही तो आया होगा ना. जो सच्चाई है ये इशू का उसको ही देख के आया होगा. तो आप लोग तो एस्पिरेंट है जो फर्स्ट एंड स्टेक होल्डर है यहाँ का ये इशू का. तो वी एक्सपेक्ट मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम एस्पिरेंट्स ओनली. तो इसीलिए वो लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन आवर नेक्स्ट मीटिंग प्लीज डू पार्टिसिपेट और हम लोग को आके एटलीस्ट रीच आउट कीजिए ना. अगर इशू इतना किसी को पता नहीं होता है ना कि क्या है क्या नहीं है, तो यू कैन रीच out us also so that we can have आप वो लोग का क्या आइडियोलॉजी है, हम लोग का क्या आइडियोलॉजी है, वो सबको हम लोग एक साथ में वर्कआउट कर सके.